Hello students, this is the lecture for class 12 chapter 10 exercise 10.3। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और इसके पहले के क्वेश्चंस जो है इसके पार्ट 1 में है, लेक्चर पार्ट 1 में, और ये है आपका पार्ट 2 जिसमें हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने से पहले एक बार इससे पहले के क्वेश्चंस को गो थ्रू जरूर करें, इसकी जो पहली वीडियो है, सो दैट आप यहां से स्मूथली कंटिन्यू कर सकें ताकि अगले क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर की मॉड्यूलस या ये मॉड वैल्यू या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है। कहां से? यहाँ से, जिसमें यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर। तो इसको चलो ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को। इट विल बी लाइक एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स डॉट ए वेक्टर minus a x vector plus minus a dot a is 12, you cancel, this comes and this is your, because it's a unit vector है ये, तो ये रहा the modulus, or we can say the magnitude of x vector square root 3. Question number 10, and the statement for it is a vector is given 2 plus 2 plus 3 and b vector is 1 2 and 1, b vector is minus 1 plus 2 and 1. Here is minus of I plus 2j plus k, c vector is 3i plus j are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c. This one is perpendicular to c. Then find this lambda, this some scalar lambda from this. If these two are perpendicular, तो हम डॉट प्रोडक्ट में है, हम डॉट प्रोडक्ट में है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। नाउ ओपन इट, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से ए डॉट सी क्या बन जाएगा? इस ए सी को हम करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए, आई विल गिव द वैल्यू विद ओनली आई कैप, राइट, 3 to the 6 आई डॉट आई और जे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जे विद आई विल 0 एंड जे विद जे विल गिव द नेक्स्ट वैल्यू 2 1 2 जे कैप जे। तो यहाँ पर के और यहाँ पर के एब्सेंट है, तो ये दोनों टोटली यहाँ पर के की वैल्यू बनेगी नहीं। कवर इट प्लस लैम्डा। फर्दर बी एंड सी की वैल्यू के लिए आई इंटू आई माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस ऑफ 3 आई कैप डॉट आई कैप, and further j with j it is 2 1 2 j cap and there is no value of k, so यहां से इसका भी खत्म हुआ। तो what we left, this is 6 plus 2 plus lambda, this is minus 3, as we know I dot I is 1, j dot j is 1, तो ये वैल्यूज यहाँ पे, this is minus lambda, this comes 6 plus 2 is 8 is equal to 0, and the value of lambda is comes to 8. Next question with the statement 11, question number 11, here is, this is magnitude of a vector b vector plus magnitude of b vector with a vector is perpendicular to this, ये हमें शो करके दिखाना है। तो परपेंडिकुलर के लिए तो हमें यही मालूम है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बन जाए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दिस वेरी फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट like this, next this with plus minus
एंड दिस वन, इसको इसके साथ, the last one is like this. From here these are same, further this can also be written like this, and this also can be written like this. These two terms are same, so dot product of this one is 0. So this is these two जो composition of vector है, this perpendicular to this composition of vector. So next question is question number 12, and the statement is where the a vector dot a vector is equals to 0 and a vector dot b vector equals to 0, then what is the b vector? What conclusion about the b vector? यहाँ पे हमें बताना है कि b vector के बारे में हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है। तो पहले a डॉट a vector, ये इसको देखते हैं। अगर हम a डॉट a को इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, राइट। तो यहां से बिकॉज सिमिलर वेक्टर्स है तो एंगल इनके बीच में 0 होगा, तो cos 0 इसको ऐसे लिख लेंगे, तो cos 0 1, तो a डॉट a वेक्टर सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, तो जो कि हमें 0 दे रखा हुआ। तो हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? ओनली व्हेन a vector is a zero vector. If a is a zero vector, now see the other side, जो हमें b के लिए कहा गया था, कहता है a डॉट b अगर 0 है तो b क्या होगा? a वेक्टर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई या डॉट विद एनी वेक्टर, उसका आंसर तो 0 रहेगा। तो इसके आंसर 0 को बनाने के लिए a का 0 दैट इज इनफ, a 0 है तो ये 0 बन जाएगा। तो उसके लिए b की वैल्यू क्या सुजेस्ट कर सकते हैं हम? वो कुछ भी हो सकती है। b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, उसे हम कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। In the question number 13, the statement is a vector, b vector and c vector are unit vectors such that the given is a vector, the sum of these three vectors is equals to 0. Now show that the dot product of the first two, next two and the first and third is equals to what value it will come. So come to this one here, जो given है इसको उठाते हैं, now square it, so open it, this one, the square of this square like this plus 2 a dot, इसको ऐसे लिख लो और या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बाद में बनेगी वही चीज। तो यहां पर लाइक बिकॉज यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इसका इस्तेमाल यही करने वाले हैं। अब इसका चाहे स्क्वायर हो रहेगा 1 ही, तो इट मीन्स इसे 1 के साथ 1 के साथ 1 के साथ चेंज करेंगे एंड दिस इज यहां पर हमें दिस वन इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 3,
So from here, this 3 go to the right side, -3 and 2, ये जो 2 है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. The answer for A dot B, B dot C, C dot A is equals to -3/2. Vector A is equals to 0 or vector B is equals to 0, then the dot product of these two vectors is equals to 0, but the converse need not to be true. इसको एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. तो ये बात तो अगर हम यहां से देखें कि अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर सिंपली अगर 0 हो तो उनका प्रोडक्ट वेक्टर, अगर उनका कोई एक वेक्टर 0 हो तो प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आंसर उनका प्रोडक्ट का बन जाता है, राइट. बिकॉज 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग मेक द थिंग 0. तो ये बात तो ट्रू है. इसका कन्वर्स अंडरस्टैंड करने के लिए वो कहता है कि अगर हमें ये दे दिया जाए दैट एनी टू वेक्टर, यहां पे लिख ली कन्वर्स, if the two vector having dot product is equals to 0, this is possible even there are some A vector and B vector. मतलब A वेक्टर और B वेक्टर के 0 ना होने के बावजूद भी डॉट प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है. कैसे? लेट्स सी, टेक सम एग्जांपल्स. लाइक यहां पे एक द वेक्टर A हम कंसीडर कर लेते हैं, like 2 minus 1 1, and vector B जो होगा this is 1 minus 3 minus 5, like this. देखिए these two vectors which are clearly, यहां पे देखो ये नॉन जीरो है, ठीक है. 0 के लिए तो प्रोडक्ट 0 होगा, ये तो साफ समझ में आता है. अब वेक्टर नॉन जीरो है, इन दो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है. सो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द वेक्टर ए इज 2i j k, दिस इज 3, दिस इज 2 i dot I, like minus minus plus 3 1 the 3 j dot j, and the final plus minus minus 5 on the 5 k dot k. So here 2, this become 1, 3, this is 1, again this is 1, this is 5 minus 5 is equal to 0. तो देखिए द डॉट प्रोडक्ट जो है 0, यही वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तो वेक्टर 0 है तो प्रोडक्ट 0 होगा. इट्स क्लियर, बट प्रोडक्ट कुड बी 0 without taking the 0 vector, which is also possible like this. So converse जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स का 0 होना भी जरूरी है. So question number 15, and the statement for this is if the vertices A, B, C of a triangle like this are given A, B and C, ये vertices हो तो हमें बताना है what is the angle what of like A, B, C, the angle between these two vectors BA and BC. What is this angle? Mean to say angle between BA vector and BC vector. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, this is 1 2 3 and this is B is your -1 0 0 and the coordinate C is 0 1 2. तो यहां से BA एंड BC पहले वेक्टर फाइंड करेंगे. BA वेक्टर विल बी लाइक A में से B को माइनस करें, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 I, दिस इज 2 माइनस 0 2 J and 3 minus 0 3 K and the vector 2 I 2 J and 3 K. फर्दर BC वेक्टर हमें चाहिए. BC वेक्टर इट मीन्स C minus B
0 minus of minus 1 is plus 1, 1 minus 0, 2 minus 0, दिस इज BC वेक्टर। तो हमें इनके बीच में एंगल ढूंढने के लिए डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, एंड हाउ दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स कैन बी रिटन लाइक दिस। सो cos of angle is this BA vector is BC vector I J 2K and modulus are 449. This is 114. This become 2 ones are 2, again 2 ones are 2, 3 to the 6, and this is 17 into 6, it comes 10 upon 102. Finally, this theta can be written cos inverse 10 by square root 102 is the angle between these two vectors according to their coordinates. Question number 16, show that these are the 3 points ABC with their coordinates are given and need to show that are collinear. For that, let's see AB vector, which is 2 minus 1, I 6 minus 2, J 3 minus 7, K, this is AB, this is I 4J minus 4K. Next your BC vector will be 3 minus 2 I and 10 minus 6 4 and minus 1 minus 3 is minus 4 K. These are two vectors. Let's say unit AC vector. AC vector is 3 minus 1 is 2, 10 minus 2 is 8, and minus 1 minus 7 is minus 8K. The modulus of AB vector is equals to 1. This is 16, 16, 33. BC again 1, 16, 16, 33, and AC is 4, 64, 64, and it will be now the AB vector plus BC vector with their magnitude value is equals to 33, 33, this is 2, which is equals to magnitude of AC vector. So here we can say AB vector magnitude, BC vector magnitude is equals to, so this shows that this ABC are the collinear points. So the last question of this chapter 10.3, question number 17, show that the given vectors form a right angled triangle. So mark, this is A, say this is B, this is C for this right angle triangle. हमें करना क्या होगा,
पहले तीनों साइड्स निकालते हैं, मीन टू से वेरी फर्स्ट फाइंड ए बी वेक्टर, देन बी सी वेक्टर, देन ए सी वेक्टर। तो देखते हैं कि ए बी सी किस तरह से राइट एंगल, यानी क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ होगा, द वेक्टर ए बी is 1 minus 2 is minus 1i minus 3 and plus 1 is minus 2, this is minus 5 minus 1 AB. So BC vector 3 minus 1 2i minus 4 plus this one minus 1 j minus 4 and plus 5 is plus k. The AC vector is 3 minus 2 I minus 4 plus 1 minus 3 and minus 4 plus minus 4 minus 1 minus 5 k cap. तो ये हमारे पास है, तो इनकी what are their magnitudes 1 4 36 41 BC 4 1 1 6 AC 1 9 25 35. Now if according to the Pythagoras theorem, this AC square plus BC square is equals to यहाँ पर 35 का स्क्वायर, BC is your 6 square root 6 square, it is 35 6 41, which is, look at here, the 41 the square of AB, this one, because जो हमने निकाल के रखा हुआ है कि अगर हम AB वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 41. तो 41 को हम स्क्वायर ऑफ दिस वन के साथ चेंज करेंगे, इम्प्लाइज इज, तो ये एक पाइथागोरस स्टेटमेंट बनती है, द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल्स टू द थर्ड स्क्वायर ऑफ द थर्ड side, which means that the given ABC coordinates are of triangle which is right angled.